Students, tell me how water is transport and in which way water is evaporated from the leaf. And we are all known that oxygen is very important for us, and that oxygen released from the leaf during the photosynthesis. But anybody can tell in which way that oxygen is released from the leaf? Chris Sharma. Chris Sharma. Unmute you. Yes, sir. You tell me, suppose one scented candlestick or mosquito removing coil from release the smoke. If we put it in a corner of room, then it spread all over the room, all over your study room. In which way it is spread all over the room? Can you tell the process? Sir, may I? Yes. Who? Sir, because sir प्रियांशु सिंह सर, क्योंकि सर वो जो अगरबत्ती रहता है उसमें से जो उसका सुगंध का वो जो गैस जो निकलता है उसका, तो सर वो एयर मॉलिक्यूल्स में एडजस्ट हो जाता है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हाईली कंप्रेस नहीं रहते हैं, पूरे मतलब फ्री रहते हैं टू मूव एनीवेयर। तो सर पूरे रूम रूम में फैल जाता है। Very good explanation, brilliant explanation. Priyanshu, you tell that gases are present in compact conditions. Okay, when it release, then it spread all over the room, all over your study room. Okay, because here the concentration of gaseous molecules are transferred from high concentration to low concentration. In this way, that molecules are gaseous components are spread all over the room. Okay, all over your study room. Okay, in this way, that gaseous are spread. Very good answer. But it have an term, special term, that is known as diffusion. क्या नाम है? Diffusion. So today we study about different type of transportation systems. We are already studied in previous class the structure of plasma membrane and cell wall, and they have so many functions, and there have so special terms: osmosis, diffusion, transportation systems. And I already told you transportation systems is two types: active transport and passive transport. In case of active transport, the transport systems is two types. So today's topic is we are studying about different type of solution. Okay, different type of solution and their transportation system. Solution and transportation system. Transportation system. Okay. First type transport means क्या होते हैं? Now when solute molecules are transferred from one place to another place, okay, that is called the transportation system. Okay, that transportation systems are two types. Number one is transportation is two types. Number one is active
active transport and number second is passive transport. ठीक है, active transport and passive transport. Definition of active transport, anybody can remember, anybody can tell? Active transport Yes, means sir. yes, yes, एक second, just 1 minute. Sir, yes. Active transport, dancing even sir. Yes, sir. The active transport need energy. The name of the energy is ATP, or and it need energy because he was freely and he moved against the no concentration Okay, thank you against this for rule. your trying to answer that definition of active transport. I am again clearly tell everybody. Okay, that means active transport means in which transportation systems the transfer of molecules need energy, yeah, ATP, where needed ATP to transfer the molecules, that is known as active transport. Okay, energy required होता है, required energy for the transportation system, in which transportation systems require energy, ATP, energy means ATP, that is called the active transport system. And passive transport system need not require any energy or ATP. Okay, need not require ATP, mainly ATP. Okay, that is called the passive transport system. Clear? Now passive transport systems types, it is also two types. I bring to your NCERT books. Number one is diffusion and osmosis. Okay, please joining now. Okay, so diffusion and osmosis. मतलब सर जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं Osmosis. ऑस्मोसिस No. नहीं. Continue follow the class, then you can understood that the meaning of diffusion and osmosis. Okay. Now I am telling you about diffusion. What do we mean diffusions? Diffusions, where occur the diffusions? Which criteria are needed for the diffusions? For the diffusions, there need some special type of criteria. That means here need that molecules are transferred from higher concentration to the region of lower concentrations. Understood? Higher concentration to lower concentrations. ठीक है? Okay. Diffusions क्या हो सकते हैं? What do you mean by diffusion? The process of movement of substance. Okay, the process of movement of substance. Substance means it may be solid, liquid or gaseous. Okay, from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Okay, till spread uniformly in the given space is called diffusion. Understood? The diffusions occurred in solid to solid, liquid to liquid, gaseous to solid, solid to gaseous. In this way diffusions can be occurred. Okay, give one example of diffusion when we doing a activity work of diffusion. That means suppose, what is this? This is the beaker, and in the beaker there are put water. I put water. इसमें क्या किए ना, water रखे हैं. ठीक है? And in that
container, they have red color pigments, that is known as saffronine pigment. It is the red color. Okay, when we dropped visible or not? Visible? Yes, sir. Yes, sir. That is the diffusion. Understood? Here the red color are transfer high concentration to low concentration. Visible? Clearly visible? Okay, that is the diffusion. That is the diffusion. Solvent moves by concentration gradient. Solvent moves by concentration gradient. Concentration gradient means that solvent moves concentration gradient. Concentration gradient means that molecules are transferred high concentration to low concentrations. Clear? That is the diffusion. It is the example of liquid to liquid diffusions. The diffusions occurred in liquid media. Okay, and dear students, are you know naphthalene? Naphthalene जानते हो? Naphthalene Yes, sir. कपूर बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज को देखो. कभी कभी हम लोग ओडोनिल्स we are used in our bathroom. Odonils, when put it in a corner, after some days they are vanished. Is not it from the packet? Why? Because they are diffused. In which way? Here the example of diffusion is solid to gaseous. Okay, understood? This is the diffusion. But in case of osmosis, here all I am firstly I am सर telling. फिर से ज्वाइन करोगे, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे. Okay. Diffusion means where the molecules are transferred from high concentration to low concentration. That is called the diffusion. Clear? Understood everybody? Okay. तो diffusion में क्या होता है? Next ना characters of diffusion helps in spread of different substance through cytoplasm of cell. क्या functions हैं? देखो इसमें देखो जैसे हम लोग क्या किए ना, when we put 1 drop of saffronin in the water, then that water convert into red color. Okay, here the solvents are totally dissolved in water and spread all over the water. As a result, the color of water सर is वाटर turned न्यूट्रल to होता है. red water. ठीक है? Okay. Just wait. I'm clearing about solute, solvent, and solution. Meaning of solute, solvent, and solutions. Okay. Now listen. Now some important points about diffusions. That means number 1 point, helps in spread of different substances through cytoplasm of cell. Cell जो होते हैं, that is the cell. Cytoplasm, you are all know meaning of cytoplasm. Inside the cell, inside the cell there present some different type of liquid substance which is known as cytoplasm. Plasma मतलब क्या होते हैं? सेमी सॉलिड सब्सटेंस. ठीक है, तो सेल के अंदर जब क्या होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, लिक्विड्स, सॉल्वेंट्स, ये सब जब क्या होते हैं एंट्री होते हैं. एंट्री होने के बाद क्या हो जाते हैं ना, जैसे वाटर में देखो ना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में वो ट्रांसफर हो गया था, इस तरीके से ये भी क्या हो जाते हैं पूरा सेल के अंदर वो डिफ्यूज्ड हो जाते हैं. तो ये एक एक्टिविटीज हैं क्या चीज का? डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन हैव इंपॉर्टेंट रोल. ओके, थ्रू spread the nutrient materials inside the cytoplasm. ठीक है, understood? Diffusions helps in exchange of respiratory gases
between the cells and their environment. ओके तो डिफ्यूजन्स को देखो, डिफ्यूजन्स में बताया था क्या होते हैं, लिक्विड टू लिक्विड हो सकते हैं, गैसियस टू गैसियस हो सकते हैं. दैट मींस लिक्विड occurred in different media, liquid to liquid, gaseous to gaseous. We are continuously breathing. Okay, then we take take in the oxygens and out release the carbon dioxide. After then that carbon dioxide spread all over the environment. Okay, so diffusion helps in exchange of respiratory gases between the cell and their environment. Cell and environment में क्या होते हैं, ये gases क्या होते हैं ना, spread होने के लिए help करते हैं. Okay, during the transpiration is diffusion process. Transpiration means na evaporation of water to the plant leaf stomata. Stomata के थ्रू जो वाटर इवापोरेट होते रहता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन. ओके, द ट्रांसपिरेशंस occurred by the diffusion process. Okay, flowers spread their aromatic smelling, their smell, okay, through the diffusion to attract the insect. Understood? Flowers देखो, flowers different flower have different type of smell. Okay, due to the different kind of smells, the smells are attract the insects for the pollination. Okay, तो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ये खुशबू के कारण से. अंडरस्टूड, समझ में आया? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन्स. अंडरस्टूड, एंड एप्लीकेशन एंड इट्स रोल ऑफ डिफ्यूजन. सेम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन एंड रोल ऑफ डिफ्यूजन. आंसर इज सेम. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. Osmosis means, what to mean by osmosis? Now we study about the osmosis. Osmosis. Meaning of osmosis, that osmosis can define as the diffusion of water or solvent across a semi-permeable membrane. Okay. Okay. Suppose this is the beaker. Here I put one semi-permeable membrane. Meaning of semi-permeable membrane I already discussed in previous classes. Okay. Semi-permeable membrane. Here this is the semi-permeable membrane. That means that membranes have characters to transfer the some molecules. Okay, तो क्या होते हैं, और डिफ्यूजन मींस क्या होते हैं ना, सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं. वहां पे नीड क्या होते हैं, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सब का कोई नीड्स नहीं है. ठीक है, और डिफ्यूजन में क्या होता है, देयर हैव नो नीड एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर प्रेजेंस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. Okay, and here the water or solvent here water or solvent across a semi-permeable membrane. Suppose this is the water layer. Here same amount of water are present in the beaker. Now I put some sucrose molecules inside that section. Okay, इस सेक्शंस में हम क्या किए ना, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, सुगर मॉलिक्यूल्स कुछ डाल दिए हैं और यहाँ पे मेल्टिंग हो गया. Here the concentration is high. Okay, here the concentration is high. Okay, now here the water molecules are entered into that section. Okay, this is known as osmosis. Definitions. Now, this is the one type of diffusions, but here need semi-permeable membrane, and here solvent only transfer to the
next regions to the membrane. Okay, here plasma membrane functions as semi-permeable membrane. Inside the cell, cell outside of the cell, there are present plasma membrane. That plasma membranes have semi-permeable characters. Clear? Understood? So, what is the difference between diffusion and osmosis? Difference between diffusion and osmosis. In diffusion can take place in solid, liquid and gaseous media. ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, किसी एक मीडिया में ये हो सकता है. बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, the osmosis is occurred only in liquid medium. Understood? Osmosis occurred in only liquid medium, but diffusion occurred in solid, liquid and gaseous. Clear? And in case of diffusion, it does not involve any semi-permeable membrane. Okay? In case of diffusion, there need not any semi-permeable membrane. But in case of osmosis, there must be needed, they are required semi-permeable membrane. Okay? Understood? Next, you can tell that in case of diffusion, it equalized means equality, the concentrations of substance. That means क्या होते हैं, suppose in a beaker there have one partition here and here presents one channel. Okay, here presents one hole. And now I poured water, so water layer is present in same, but here I dropped one red pigment, but here I am not dropping no any pigments. तब क्या होगा ना, ये जो वाटर रेड पिगमेंट्स क्या होगा, धीरे धीरे सीधा भी जाएगा, जैसे हुआ इसमें हुआ. जब तक वो क्या होते हैं ना, पूरा वाटर को रेड किए तब तक वो क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते गया है. ठीक है, जब तक इक्वली पूरा वाटर को जब तक इक्वली रेड कलर में कन्वर्ट नहीं किए हैं तब तक क्या हो चलते रहते हैं ना, वो सॉल्वेंट की मूवमेंट चलते रहता है. That is the equalizes. Okay, understood? It equalizes the concentration. क्या चीज का concentration? ये solvent का. रेड कलर जो डाला था वो देखो कौन सा था ना, बहुत ही concentration था, concentrate था. ठीक है, और वाटर में तो कोई रेड कलर नहीं था. जैसे हम लोग क्या किए, वाटर में रेड कलर को जैसे वन ड्रॉप दिए हैं तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे से पूरा वाटर को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिए. कब तक इस टाइप की कन्वर्टाइजेशन चला है ना, जब तक पूरा वाटर रेड ना हो चुका. ठीक है, ना हो रहा है. ओके, समझ में आया? तो लेकिन यहाँ पे देखो, जो प्योर रेड कलर की जो ड्रॉप था वो जितना कॉन्सेंट्रेट जितना रेड कलर की था, और ये वो वाटर उतना रेड कलर की नहीं है, क्योंकि वो जो कंटेंट्स उसका जो मॉलिक्यूल्स रेड कलर की मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, वो पूरा वाटर में स्प्रेड हो चुका है, इसीलिए. अंडरस्टूड? Okay, that is the equalizes the concentration of substances. Okay, and osmosis, it does not equalize the concentration of solvent on the two sides of the membrane. That is the diffusion. Osmosis, here the concentration is not equalized. यहाँ पे concentration equalized नहीं होता है. Examples हम बताएंगे osmosis का. देखो, जब क्या करते हैं हम लोग, किशमिश को क्या करते हैं, वाटर में हम लोग डुबा के रख देते हैं, तो देखो ना, वाटर किशमिश क्या हो जाते हैं ना, शाम को हम लोग डुबा के रख दिए, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में जब उसको देखेंगे क्या हो जाता है, पूरा सोलेन हो जाता है. तो यहाँ पे किशमिश की जो बाहर की जो लेयर जो रहता है वो कौन सा है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसके कारण से क्या हुआ ना, ये वाटर एंट्री हुआ, वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जांपल है. तो यहाँ पे ना वाटर में जो स्वीट टेस्ट और किशमिश के अंदर जो स्वीट टेस्ट जो रहता है, दोनों के अंदर में देखो ना बहुत अंतर है. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, किशमिश के अंदर स्वीट टेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण से क्या है, उसके अंदर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके कारण से वहाँ पे क्या है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स किशमिश के अंदर एंट्री हुआ और वहाँ पे स्टोर हो गया है वाटर. समझ में आया? तो
ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, इट डज नॉट इक्वलाइज, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होता है सॉल्वेंट की। ओके, इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की बोथ साइड की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन वो इक्वलाइज नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डिफ्यूजन में क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। समझ में, जो क्या होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस मींस जो क्या, देखो ना, एक ही वाटर में आप सॉल्ट और शुगर बोथ को क्या किए ना मेल्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस को क्या किए यहाँ पे ना, यहाँ पे मेल्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो आयरन्स जो होते हैं उसका भी क्या होता है, हम लोग डिफरेंट हाइब्रिड टाइप की हम लोग मेटल्स बना सकते हैं, हाइब्रिड मेटल्स, ब्रोंज हाइब्रिड मेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ components mix with each another, that is the diffusion. ओके, डिफ्यूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड चीज को हम लोग एक साथ मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो कलर, डिफरेंट कलर को मिक्स करके हम लोग एक नया टाइप की कलर बना सकते हैं, तो दैट इज द डिफ्यूजन कैरेक्टर्स। ओके, तो डिफरेंट सब्सटेंस, यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट टाइप की कलर को क्या किए हम मिक्स करके न्यू कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ओके, but in case of osmosis only solvent undergoes diffusion. Okay, what do you mean by solvent? Suppose water and solvent, solute and solutions, meaning क्या है, number one solvent, solvent means यहाँ पे क्या है ना, water। ठीक है, solute means सपोज शुगर या सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्यूशन मींस ये दोनों की लिक्विड मिक्स करके जो निकल रिलीज हम लोग को जो न्यू जो कंपोनेंट निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। Okay, that is the solution. Solvent, that is water, solute means salt, and mixing components, this is known as solution. Okay, mind it. Next class, in next class we will study about hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. Okay, clear? Today we discuss about type of transport systems, active transport and type of passive transport, active transport, passive transport, type of passive transport, two types, osmosis, diffusion, and their explanations. Osmosis, diffusions, their examples, their use in our daily life in living organisms. Okay, that means their importance. Next, difference between diffusion and osmosis. Okay, here most important question is meaning of diffusion, difference between, write the difference between diffusion and osmosis. It is the very most important question. Okay, understood, dear students? In next class we will study about type of solution and nucleus. Okay, everybody understood? Have any query? Okay,